Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will learn about the different movements of the earth. Let's start. The content of the video is why and how the sunrise and sunset, how earth spin and what is the reason of spinning. Then we will learn about the two types of movements of the earth, rotation and revolution. Then we will compare rotation and revolution, and then we will discuss the relation between the revolution and the how it is responsible for the formation of seasons. First of all, we will discuss how sunrise and sunset. All of us know that sunrise from the east and it set in the west, and it seemed that the sun changing its position throughout the day. But do you know that actually the sun is not moving, it stays on its place in the center of the solar system, but it is the earth that is changing its position, and because of the changing positions of the earth, we feel that the sunrise and sunset. I mean at the different times of the day हमें ये फील होता है कि कभी सूरज हमारे ओवरहेड है, कभी हमें सूरज ग्रूप होते हुए नजर आता है, बट एक्चुअली सूरज कहीं नहीं जा रहा होता, इट्स द अर्थ जो कि मूव कर रही होती है, और अर्थ की उस मूवमेंट की वजह से हमें ये फील हो रहा होता है कि सनराइज और सनसेट हो रहा है. देन हमने ये कहा कि अर्थ की मूवमेंट की वजह से. अच्छा, अब जब अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ की मूवमेंट क्या है, कैसे मूव कर रही है और इसके मूवमेंट की रीज़न क्या है, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो अर्थ जो मूव कर रही है इसको स्पिनिंग कहा जाता है. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर नॉट फीलिंग दैट द अर्थ इज मूविंग. And obviously we think that maybe it is moving very slowly, that's why we can't feel, but actually the earth is moving very fast. It spin in the speed of 1670 kilometer, and it revolve or orbit in 67,000 miles per hour. Okay, it's a very fast movement, but we do not feel movement because these two movements, rotation and revolution, are constant. That's why we are not feeling, because when the movements are constant, we can't feel the movement, because we don't feel any acceleration or deceleration, because these two movements are constant at that time. For example, if we move in a car, we will not feel the motion if the car is moving on a smooth surface, but we will feel the motion when brakes applied, because the car accelerate at that time. ठीक है कि अर्थ एट सेम टाइम रिवॉल्व भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, बट हमें फील नहीं हो रहा. क्यों? इसलिए कि दोनों मूवमेंट कांस्टेंट हैं. तो ठीक है, अर्थ की मूवमेंट दो तरह की है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. ठीक है, बट हमें क्यों नहीं फील हो रही? क्योंकि ये रोटेशन एंड रेवोल्यूशन जो है वो दोनों कांस्टेंट हैं. व्हाट इज द रीजन ऑफ द स्पिनिंग? क्यों अर्थ स्पिन क्यों कर रही है? So we all know about the Big Bang, that when 4.6 billion years ago, when the Earth is formed, all these bodies which move around the sun, they accumulate here, they gathered here, and then they start to spin around the sun because of the gravity of the sun. ठीक है, जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो वो बिग बैंग की वजह से जो उसके डिफरेंट पीसेस बन गए, जो उससे अलग हुए वो पीसेस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पिन करना शुरू कर दिया अराउंड द सन. ठीक है, एंड इट इज़ जस्ट सिमिलर कि जैसे जो स्केटिंग करने वाले होते हैं, स्केटर्स जो होते हैं, वो जब मूव करते हैं तो वो व्हेन दे पुल इन देयर आर्म्स, तो देयर स्पीड इंक्रीज, वो ज़्यादा फास्टर स्पिन करने लगते हैं. जस्ट लाइक दैट जो अर्थ है ये स्पिन कर रही है अराउंड द सन, और वाई इट इज़ नॉट द स्पिनिंग इज नॉट स्टॉपिंग, बिकॉज नो मोशन इज applying on it to stop the force, no force is applying to stop the movement. That's why जब इस पे कोई जब movement पे कोई आउटर फोर्स अप्लाई नहीं होती तो वो मूवमेंट रुकती नहीं है. तो अर्थ क्यों मूव कर रही है? अर्थ स्पिन कर रही है अराउंड द सन, और ये क्यों स्पिन कर रही है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ये यहाँ मौजूद है और ये स्पिन कर रही है. और ये रुकती क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर कोई आउटर फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रही. स्पिनिंग को रोकने के लिए कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है.
Now we will discuss the movement of the earth, and we will discuss the first movement, rotation. अब ये जो रोटेशन है ये कौन सी मूवमेंट है? रोटेशन इज द शॉर्टर मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है, इट्स द डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ. और एक्चुअली अगर हम कंटेक्चुअल मीनिंग के हिसाब से बात करें तो रोटेशन क्या है? सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स सेंटर. जब सेंटर के इर्द गिर्द कोई भी एक बॉडी मूव करती है तो उसका एक्सिस होता है, वो उसकी रोटेशन होती है. और अगर हम इफ वी स्पेशली डिस्कस अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो rotation of the earth is the movement of the earth on its axis. Now what is the axis? Axis is the line from north pole to the south pole, but it is an invisible line, we can't see this line, and the earth complete one rotation in 24 hours, and it take one complete day, and during this rotation the days and nights are formed. And what is the benefit of rotation? Because of the rotation of the earth, every part faces the sun and get warmth from the sun. And if we don't have the movement of rotation, one part of the earth will become very hot and the other part will become very cold, and it freezes and become dark. तो रोटेशन क्या है? शॉर्ट मूवमेंट ऑफ द अर्थ है, ये 24 आवर्स में कंप्लीट होती है. और इसका बेनिफिट क्या है कि इसकी वजह से डेज एंड नाइट्स फॉर्म्ड होते हैं, और इस बिकॉज ऑफ रोटेशन वी हैव डिफरेंट दैट एवरी पार्ट गेट द वार्मथ ऑफ द सन. Then we will discuss the revolution. Now what is revolution? Revolution is the second movement of the earth. It is the long movement of the earth, and it is the movement of the earth around the sun. Now the earth is moving in two ways. It is rotating around its axis, and it's revolve around the sun in orbits. And the earth take 365.25 days to complete one revolution. Now, but we have 365 days in a year. What about this 0.25? We will add these 0.25 in for 4 years, and then after 4 years we have a year with 366 days, which is known as leap year. And this one day will be added in the month of Feb, and in the month of Feb we have 29 days instead of 28 days as we have in our normal years. And the speed of the revolution is 67,000 miles per hour. Now you can see the image of rotation and revolution, that rotation is the movement of the earth on its axis and revolution is the movement around the sun. Rotation is a short and daily movement, revolution is the long movement. Now what is the planet? Planet is a large body that orbit around the sun. And what is orbit? The path around the sun is known as an orbit. Now we will compare these two movements, rotation and revolution. Rotation is the short movement of the earth, while revolution is the long movement of the earth. Earth rotates on axis while it revolves around the sun in orbit. Earth completes in 24 hours, while revolution takes 365.25 days to complete. Rotation makes days and nights, while revolution makes a year. Then rotation give us days and nights, and revolution make the seasons. You can see the images of rotation and revolution, that rotation make days and night while revolution make different season. We have summer, autumn, fall and winter because of revolution. Now we will discuss what is the relation between the season and the revolution of the earth. Do you know we have seasons because of the long movement revolution, and the thing which is responsible for the season in revolution is its tilt. The tilt of the earth is responsible for different season. You can see no tilt image and tilt of the earth image. The earth revolves around the sun, and the reason why we have season is that during its revolution around the sun, the earth is tilted. The earth tilt affect the amount of daylight each hemisphere gets, which in turn make the temperature hotter or colder, while places near the equator, the places which are found near the equator, they have longer summer seasons and very short winter season.
ठीक है. The places away from equator have long winter season while short summer season, and north and south poles have cold climate. In fact, they are in frozen condition. बट ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ. अगर ये स्ट्रेट होती, इसमें टिल्ट ना होता, और इसका 1223.5 डिग्री है, अगर इसमें ये टिल्ट ना होता तो क्या होता कि हमारे पास कोई सीजन ना होते. एक एरिया जो है वहाँ सारा साल एक ही सीज़न रहता, दूसरे एरिया में सारा साल सेम सीज़न यानी कोल्ड रहता और एक हिस्सा वार्म रहता. ठीक है. तो टिल्ट ऑफ द अर्थ की वजह से वी हैव डिफरेंट सीजन्स. Now you have some questions to test yourself. Find the answer. Watch the video, then write the answer. Then again watch the video to check your answer. And your questions are: what is the speed of rotation? At what speed the Earth revolves? What is an orbit? How much time does the Earth take to rotate? Write two movements of the Earth. Why do we have different season? What is an axis and what is tilt? Find answer of this question. Allah Hafiz and best of luck.